Okay, hello, good afternoon. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are live, and today we are going to resume our sessions for Hindu analysis. Welcome back to another session of today's Hindu analysis. Today is 3rd of February, and we are now into a new month, the second month of the year. I hope all of you are preparing really well. Your preparations are going right on track, and you are setting and achieving your weekly goals as well as your daily goals. चलो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले if you guys can hear me, if you can see me, if you are live in the stream, please let me know in the chat box if you have arrived, and then we shall start. I hope every one of you watched the budget session on 1st of February. We did an exclusive session on budget. In fact, two sessions. One was by Salik sir in Hindi, one was by me in English. So make sure you watch at least one of them so that you know everything about the Union Budget 2025. इकोनॉमिक सर्वे पे भी आप लोगों के लिए सेशन आने वाला है बहुत जल्दी, and multiple other interesting sessions lined up. So make sure you are tuned in and regular to the channel right now. If you are currently watching this stream, I would appreciate some responses in the chat box. अगर आप लोग यहाँ आ चुके हैं तो please let me know, and then we shall begin. Are you guys here? How many of you have joined? Please let me know in the chat box. विदुषी saying not yet watched, will watch today. चलो ठीक है, बढ़िया है. स्टार्ट करें आज का सेशन. देविका is here. Good afternoon, Devika. All right, chalo, let's begin. Let's not waste any more time. Let's start today's session. I'll pull up the presentation for you all. Today is 3rd of February. This is our presentation. Let's look at the agenda for the day. Now, from a very long period of time, not very long, but from a few days, we were discussing that we would talk in detail about the Congo issue. So वो शुभ घड़ी आ चुकी है, वो मुहूर्त आ चुका है. आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा about the Congo issue. What is actually happening in Congo? Congo, the full name is DRC, Democratic Republic of Congo. It's a country in Central Africa, and currently there have been going a lot of people losing lives, revolts, clashes, conflicts happening in this particular region. Let's understand what is the conflict about and what are the people who are creating the conflict seeking. So we'll decode this particular topic. We'll talk about it for good 5-10 minutes. I'll explain to you the historical significance, the cultural significance, the political significance, and the current events with respect to the Congo issue. So that is from where we start. Then we have articles from our newspaper. The second one is Trump and tariffs. Now, most of you must be following news, and if you are following, you must be aware that Trump is putting tariffs left, right, and center on various countries, on various goods, on various services. And there is an article regarding that, especially putting tariffs on China. Recently, Trump has put a lot of tariffs on 3 major countries, which are also one of the 3 largest trading partners of US. Can you guys name those countries? Are you guys aware of this news? कौन सी 3 countries हैं जिन पे अभी heavy tariffs लगाए गए हैं? Please tell me in the chat box if you know them. Then we have another article which talks about laws against AI tools. Now, artificial intelligence is going crazy these days. Recently, we saw the development of DeepSeek, but there are downsides to this technology as well. There is a possibility of misuse, and for that, the UK government, not Uttarakhand, we are talking about the United Kingdom. The UK is planning to bring laws against artificial intelligence tools, and there is an article about it, and we'll read it and we'll understand it. And lastly, there is another article on fossil fuels and subsidy. Now, what do we mean by that? We mean that why are we not able to transition quickly from fossil fuels to, let's say, renewable sources of energy? Why are we not doing that? Because fossil fuels are heavily subsidized. It's much easier to procure fossil fuels, to process fossil fuels, extract fossil fuels. And there is an article which talks about that with numbers. So we'll do that as well.
Now, there are two editorial articles as well in today's newspaper which are on the budget session, which are on the Indian budget 2025 annual budget. So why are we not doing that? Those two particular editorials, because they are talking more or less the same things which we have already discussed on 1st of February in our budget session. So if you have watched that session or are planning to watch that session, you can probably skip those editorials or maybe give it a read. But we don't need a deep down analysis because we have already done that on 1st of February. And that is why these are the four articles, four topics which we are going to do today, of course followed by three new words of vocabulary. So that is the agenda for today's class, and if you guys are ready, let's begin. Are we ready? Is everyone ready? Shall we start? Give me a quick yes in the chat box if you guys are here, if you guys are ready to start. जल्दी से न्यूज़पेपर ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं हम अपना. Vidushi has given you the right answer. Usse pehle Piyush and Pro Gaming also gave me the right answer. The three countries I was asking where tariffs have been put up by US are Canada, Mexico, and China. That's absolutely correct. All right, chalo, let's start. Let's begin today's class. I'll quickly share the newspaper with you guys and we'll go through the newspaper, identify what's important, what's not, and then come back to our analysis. All right. गोल्ड और स्टील बंगाल मींस मेटल है, ये तो राइम भी नहीं हुआ. चलो एनीवे, ममता जी की बड़ी बड़ी फोटो आ गई है न्यूज़पेपर पे, क्या बात है. ऑलराइट. Tax break will give a fillip to slowing economy. What do we mean by a fillip? A boost, an impetus, a push to the slowing economy, says Center. You can see the Finance Secretary, Mr. Tuheen Pandey, saying it's a relief and a policy choice that the government has exercised, which would bring more disposable income in the market, which would create more consumption, which would increase demand and boost the economy. Economy कैसे boost होती है? जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जब ज़्यादा डिमांड होती है, जब ज़्यादा कंजम्पशन होता है. एंड द रीसेंट थिंग वेयर इनकम टैक्स हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर most of middle class, this would, they believe, give a fillip to the slowing economy. On the right hand side, you have politics based news, which is not important for us. So we'll move ahead. Trump slaps tariffs on Canada, Mexico, and China. So it's a front page news here as well. Trading partners Canada, Mexico, and China claiming a major threat from illegal immigration and drugs. So that is why they have put up a tariff, a 25% tariff starting Tuesday. Although energy resources from Canada will have a lower 10% tariff. Goods from China, which already face various rates of duties, will see an additional 10% tariff. अब इस पे एक और आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे, which talks about fentanyl. Fentanyl is a drug. It's an opioid. And उस पे भी tariffs लग गए हैं. So we'll talk about that. Budget's tariff tweaks will correct bad optics. This is not important. Let's move ahead. 260 refugees from Myanmar seek shelter in Manipur. Okay. Interesting. Now, moving ahead, we have Delhi elections. Let's skip this. We have state news. Medical force on high alert on the eve of Basant Panchami Amrit Snan in Prayagraj. So another Amrit Snan is happening. Amrit Snan are sort of more auspicious days to take the holy dip. And recently, in the recent Amrit Snan, tragedy happened where a lot of people got caught in a stampede. Bhagdad मच गई वहाँ पे and कुछ लोगों की जान चली गई. Very unfortunate. So इस वजह से इस बार जो है मेडिकल फोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो. 1200 medical personnel have been deployed. CM has directed that no doctor or staff should leave their post till February 6. Okay, moving ahead. Mahakumbh stampede. Congress asked why government is not revealing the numbers. Okay, moving ahead. Row in Kerala. This is not important. Not important. Not important. Nothing important here. See, all these news, you can just read the headlines. I don't suggest you read the entire article because these are state-specific news and are not that relevant from a national importance perspective or from a competitive exam perspective. So when I skip the news, I mean that you can just read the headlines without reading the entire article. You should be aware of what is happening in the country in different states, but you don't need to go too deep into it. All right, now we're down to the editorial section.
As I said, the two editorials on budget, one is budget tax cuts, a closer read of the union budget. So yeah, they have just talked about various other things apart from the tax cut, which was the highlight of the budget session and the union budget. So they have explained other different things, but इस article से ज़्यादा comprehensively we have discussed it in the first Feb वाला session. So make sure you do watch that session. Either सलीक सर का या मेरा, that does not matter. At least one of them. दोनों देखोगे तो और consolidate हो जाएगा और अच्छी बात है. ठीक है. So budget वाले हम नहीं करेंगे. दोनों articles. On the left hand side we have without warrant police seizure of journals. This is local news. Okay, we have another article on crisis in Congo. For peace, the country should take Tutsis into confidence. Who are Tutsis? Why should they be taken into confidence? What is the crisis in Congo? That we'll discuss when we come back to our analysis presentation. Moving ahead to opinion piece, budget 25 overlooks joblessness. So they're saying that although they have taken multiple initiatives, they have not really given a lot of priority to skill building and employment, generation of jobs, and that is what the article is about. They're saying it's a deflationary budget. Tax break for income taxpayers along with cuts in capital welfare expenditure are unlikely to raise the living standards of vast majority of working people. So they are saying that the working class or the labor class, they are still struggling to make ends meet and उनके welfare के लिए इस budget में ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है. So you can read this article. We have already discussed almost every dimension of budget which is required from your exam perspective. So again, not going into the details of this. Then we have another article, how much in subsidies do fossil fuels receive? So the estimates range from less than $1 trillion to $7 trillion, depending on the ways in which subsidies are defined. Now, what are subsidies? Subsidies are, a method or a way out in which you make something more affordable, right? You give, I don't want to call it a discount, but yeah, you make a relaxation in some way in the price. So this article basically says that if you actually want to work towards climate change, if you want to work towards global warming, you need to move to low carbon energy sources and move away from fossil fuels. And this transition is not that easy because fossil fuels are cheaper and दूसरे वाले sources are not cheaper. The lowdown on fossil fuel subsidies. So they are showing how much in subsidies do fossil fuels receive, as in processing these fossil fuels, in extracting these fossil fuels. They have given you a lot of numbers. So we'll talk about this in a little more detail when we come back to our analysis. Let's check out what else do we have in the newspaper. On live-in relationships in Uttarakhand, we have already discussed this when we were discussing, the implementation of UCC in Uttarakhand, and Amitain sir also discussed this in a video. Make sure you do check that out as well. But what this article essentially is re-emphasizing is about live-in relationships and their registration. So we'll just quickly read the gist of this particular article, which would help us understand what exactly it's about. So firstly, they tell you that under the code, only unmarried heterosexual couples can enter into live-in relationships. यानी कि अगर आप married हो तो obviously you're a married couple, फिर वो live-in नहीं रहा, फिर वो शादी हो गई, and you need to be a heterosexual couple. That means male and female. No other combinations, permutations, LGBTQ plus people are covered in this particular ambit. Then the next point says, as stipulated in Rule 15.3e, applicants are required to submit an extensive list of documents, set of documents for registration, like photo, income tax, PAN number, Aadhaar number, phone number, proof of residence or domicile within the state. So बहुत सारा पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा. And failure to register a live-in relationship within a month may result in both civil and criminal penalties. यानी कि आप पे फाइन भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है, और आपको दोनों चीजें भी हो सकती हैं. कितना? 3 महीने तक की जेल, 10,000 तक का फाइन, या फिर दोनों. सो ये रजिस्ट्रेशन करना कहाँ पे है? ये करना है इनकी वेबसाइट पे, विच इज ucc.uk.gov.in, if I'm not wrong. Here you can see the Chief Minister, Mr. Pushkar Singh Dhami, holding up the implementation of the UCC in Uttarakhand. So yeah, that's pretty much about it. They have talked about it from a point of view of right to privacy. They are talking about housing. They're talking about, is relationship history relevant? They're talking about the registration process, which I already told you. They're talking about the age limit.
So these are some things which you can possibly look at. But हाँ जिस हमने पढ़ ली है इस article की, and that is sufficient for now. But हाँ, I would still suggest that you guys go ahead and read this article in detail, because this is a legal development, and there are good chances that questions can be framed from this particular news piece. This is one of the big highlight news which is relevant for the law entrance exams. Now, moving ahead, the legal systems under which citizenship is acquired. We have already discussed this multiple times. This is in news because of US, especially Trump, advocating for abolition of citizenship through birth, through taking citizenship by birth. That is, if a person is born in the US, he or she directly becomes a citizen of the US. So he's planning to move away with that particular way of getting the citizenship, which is also constitutionally invalid as per various legal experts and various judges. A judge also recently passed an executive order to put a stay, passed a judgment to put a stay on that executive order by Trump. So ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट सोलह है क्या होता है, एंड हाउ इट वायलेट्स द 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. बट हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं इसके बारे में जानकारी ली है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस आर्टिकल अ रीड. Various challenges associated with AI driven genetic testing. This is not that important for us, but if you're interested in learning more about AI, you can read it. Then Grammy Awards होने वाले हैं, I think चल रहे हैं. EDH attaches overseas assets worth 16,000 crore, excuse me, in high profile cases. कौन से high profile cases? The fleeing away of multi-millionaires, billionaires like Nirav Modi, Mehul Choksi, Lalit Modi, all of these guys who have fled the country, but they have assets in India and abroad. So the central agency, the Enforcement Directorate, has cracked down on properties in US, UK, UAE, Japan, and several other foreign jurisdictions in cases involving business houses like DHFL and prominent persons like these. So this they are being seized under the PMLA, which is the Prevention of Money Laundering Act, and various other financial offenses. पढ़ सकते हो इस आर्टिकल को, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. Then moving ahead, what do we have? Nothing interesting here. We heard the voice of middle class Sitaraman. This time, though, everyone is very happy with Miss Sitaraman, and rightly so. I mean, some relief to the middle class. All right, moving ahead, what do we have? Forum flags fall in employment days under MGNREGS, which is your Manrega scheme, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, जिसकी हम बात काफी दिनों से कर रहे हैं, and we are talking about it because employment is not being provided, because the wages have been delayed, because there has been a fall in employment. So the scheme is not going on the right track, and that is why it's under scrutiny from a very long period of time. Now, India reviewing its stance on crypto due to global changes. Currently, crypto को legal tender तो नहीं मानते हम लोग, and उस पे 30% taxation है capital gains from crypto पे. So we still don't have a specific regulation to regulate crypto like we have for different other asset class like mutual funds, like stocks, and so on. क्रिप्टो के लिए हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क या लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो वी आर लुकिंग एट दैट due to global changes, because the acceptance and the usage of crypto is increasing globally. So India should definitely look at its current stance on cryptocurrency. Okay, moving ahead. Navigation satellite launched last week suffers malfunction. So this was the 100th launch, the NVS-02 satellite, and this has failed to carry out the orbit raising operation. And alternate strategies would now be utilized for navigation in an elliptical orbit. So yeah, that's that. After Manipur, Assam destroys poppy plantations. So poppy plantations, of course, are a type of plant, but this plant, the plant poppy plant, is also used for nashe, various organic and inorganic drugs, and what do you call them? Narcotropic substances are made from the poppy plants. So that is one reason to destroy them, because इससे आपको मिलती है चरस, cannabis.
ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। इंडिया कैनॉट अलाउ मिलियंस ऑफ illegal immigrants, says Vice President Jagdeep Thankar. Why? Because they are disturbing the demographic nature of elections where only Indian citizens are allowed to vote. And because so many illegal migrants are coming into India and are also obtaining fake Aadhaar cards and fake voter ID cards, this is really distorting the election campaign because you're actually using migrants as voters who do not have the right to vote. CJI and Supreme Court judges hear out issues of district judiciary, discuss case pendency and recruitment. Who's our current Chief Justice? You can see him in the picture. He is Chief Justice Sanjeev Khanna. And who did he replace? Who was our previous Chief Justice before Chief Justice Sanjeev Khanna? Can you guys quickly tell me in the chat box? Previous Chief Justice का नाम क्या था हमारे? Then January records a subdued power consumption growth. This is not important. Udan expansion scheme to spur tarmac coaches demands. Udan is Ude Desh Ka Aam Nagrik. This is a scheme to usually build airports and increase air connectivity across India. Okay, moving ahead to fentanyl is US की problem, says China as it denounces tariffs. यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया उसको, बोले हम नहीं मानेंगे ये जो आपने टैरिफ बढ़ा दिया है इसको. Beijing to challenge Trump's tariff at WTO, which is your World Trade Organization, and take countermeasures in response. China says it has carried out extensive anti-narcotics cooperation with the US and achieved results. So US वाले basically कह रहे हैं कि हम टैरिफ इसलिए बढ़ा रहे हैं फेंटनिल पे क्योंकि ये ड्रग यूजेज को प्रमोट कर रहा है. तो अगर टैरिफ बढ़ जाएगा तो ड्रग महंगे हो जाएंगे, ड्रग महंगे हो जाएंगे तो उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा. And fentanyl is one such drug. It's a very strong drug, much stronger than other drugs like heroin and all of those drugs which you usually hear about. Very small quantity of fentanyl can give you the potency of what 50 times of heroin would be required for that. So it's that powerful chemical. It's a chemical drug which is opioid. That means it resembles the qualities of drugs which are made from the opium plant. ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे, थोड़ी सी और बात करेंगे इसकी क्या होता है फेंटनिल, क्यों इतनी दिक्कत है. Rubio and Panama for talks as Trump seeks return of canal. This is their panga which is happening with Panama Canal. So we have already talked about this. So इस पे और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम. He's trying to reclaim Panama Canal and yeah, that's pretty much it. Netanyahu to discuss Hamas victory with Trump on US visit. Okay. UK to introduce laws against AI tools used to generate sexual abuse images. This was the article which I said we will discuss in a little while. And yeah, we'll go back to the analysis and talk about this. India caps dream run with emphatic victory over South Africa in the summit clash. Which summit clash? Which trophy have we won? This is the women's under 19 World Cup, and Indian women's cricket team has won it second time in a row. That means in the previous year, in the previous trophy, India was victorious, and in this year, again, India is victorious. So this is the T20 World Cup, by the way. This is not the 50 over World Cup. This is the under 19 T20 World Cup for women, and we have won this particular finale in South Africa. Okay, moving ahead. Abhishek Blitz blows away England in finale as India wins series 4-1. So this was a T20 series which we were playing with England, and India has won it. Brilliant innings by Abhishek Sharma. Crazy batting. Anyway, moving ahead, what do we have? Who is benefiting from the ATP Challengers in India? So ATP Challengers are tennis tournaments. They're not that big as Grand Slams. You could call them lesser in terms of prize money, in terms of scale, in terms of popularity, in terms of the players participating. But the article is asking who exactly is benefiting from these? Are our Indian players actually benefiting from these? And the article says that not exactly, because in the past 4-5 years, only one Indian has emerged victorious in one of the ATP challengers in India, which was Sumit Nagal, I think in 2019 or 2021. Let me just quickly check it here. Yeah, see, there has been only one Indian singles winner in 12 challengers from 2019, Sumit Nagal in Chennai last year. Okay, so since 2019,
Only Sumit Nagal has won, and he won it last year in Chennai. So apart from that, mostly foreigners are coming to India and winning these titles. So they're basically saying that we need to up our game in tennis. Okay. Rampant India completes formalities in quick time, seals World Group 1 spot. Okay, all right. Moving ahead, what do we have? Beyond the buzzword, how mentorship and coaching can help transform Indian higher education. All right. Okay, so that's pretty much it what we have in today's newspaper. Let's go back and discuss the 3 4 articles which we were planning to discuss. Let's start with the first article, which is understanding the situation in Democratic Republic of Congo. Yes, DY Chandrachud is the correct answer in the chat box. Absolutely right. Given to me first by Pro Gaming. वेल डन गुड जॉब लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्गो इशू सो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि मसला क्या है यहाँ पे तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम अ कल्चरल or from an ethnic point of view. So in this particular region, in the region of, you can see Rwanda here, and you can see Democratic Republic of Congo, a huge country as compared to Rwanda. And there are primarily two, you could say, communities here, or two tribes here, or two ethnicities here, which are the Tutsi community and the Hutu community. Okay. So these two communities don't really get along well with each other. Let's just say that इनका 36 का आंकड़ा है आपस में. Now this story goes back to 1994, where there was a massive genocide in Rwanda. You guys understand what is a genocide? Mass killing of a particular community or religious group or ethnicity. So in Rwanda, these Tutsis were massively massacred. More than 800,000 Tutsis lost their lives in the Rwandan genocide of 1994. And उसके बाद जो मेजर आपके टूटसी कम्युनिटी थे दे स्टेड बैक इन रवांडा एंड जो आपके हुतू कम्युनिटी थे दे केम टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. सो अगर अभी हम बात करें डोमिनेशन की, सो द हुतू कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन डीआरसी एंड द तुत्सी कम्युनिटी इज dominant in the country of Rwanda. These two are पड़ोसी countries, neighboring countries. अब दिस इज द ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. तो तब से इनका जो है आपस में पंगा चले ही जा रहा है कि टुत्सीज कह रहे हैं हम बदला लेंगे, हम अपनी जगह वापस लेंगे, हम अपना राइट्स रिक्लेम करेंगे. टुत्सीज रहते हैं डीआरसी में भी, बट उनको ऐसा टुत्सीज रेबल ग्रुप्स बोलते हैं कि उनको बहुत ऑपरेस किया जाता है. देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो अब टुत्सी लोग कह रहे हैं कि भाई अब आ गया है बदला लेने का टाइम, अब आ गया है कब्जा लेने का टाइम. तो अब कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है कि 1994 के बाद चीज़ें थोड़ी शांत हो जाती हैं. दोनों कंट्रीज में अलग अलग कम्युनिटीज चली जाती हैं और 2009 में एक रेजोल्यूशन आता है विच इज कॉल्ड द मार्च 23 रेजोल्यूशन, which is a peace resolution between these two particular groups, these two particular countries, which say कि भाई ठीक है बहुत टाइम से हम लोग लड़ रहे हैं, 30 साल से हम लोग लड़ रहे हैं 1994 के बाद से. अब let's just come to peace with each other and let's just live peacefully. But this peace resolution does not turn out to be successful. ये successful होता नहीं हो पाता in curbing down the violence. तो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा violence चलता ही जाता है. एंड इस मार्च 23 से ही नाम बना है एक टूटसी रेबल ग्रुप का, विच इज कॉल्ड द M23. आपने कई बार न्यूज में, अगर आपने कॉन्गो वाली न्यूज फॉलो करी हो तो M23 हर जगह लिखा होगा. तो M23 आया कहाँ से नाम? ये इस मार्च 23 से आया, जिस दिन ये रेजोल्यूशन को पास करने की कोशिश करी गई थी, द पीस रेजोल्यूशन, द पीस ट्रीटी. ठीक है. सो अभी तक हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि भाई क्या है, चल क्या रहा है एक्चुअली. तो अब ये जो M23 है, दीज आर रेबल ग्रुप, एक मिलिट्री रेबल ग्रुप है ये लोग, प्राइमरली ऑफ द टुत्सी कम्युनिटी, जो कि डीआरसी में ही रहते हैं. एंड डीआरसी में ये लोग ये लोग का कहना है कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी राइट्स, वी आर ट्राइंग टू गेट इक्वल से इन आवर कंट्री.
एंड उसके लिए वी आर टेकिंग अप आर्म्स, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, करेक्ट। अब मिलिट्री ग्रुप अगर किसी कंट्री के अंदर है और उसको मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, तो व्हाट इज द वन थिंग विच दे रिक्वायर द मोस्ट? एनी गेसेस? एक मिलिट्री ग्रुप को क्या चाहिए दंगा फसाद करने के लिए? व्हाट डू वी नीड? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। फेयर इनफ, आर्म्स चाहिए, वेपन्स चाहिए। आर्म्स और वेपन्स खरीदने के लिए क्या चाहिए? लेट्स गो वन स्टेप बैक। व्हाट डू यू नीड टू बाय आर्म्स एंड वेपन्स? रोकड़ा चाहिए। वी नीड मनी, पैसे, पैसा। करेक्ट। सो इनको वेपन्स और पैसा कौन दे रहा है? इनको वेपन्स और पैसा दे रहा है रवांडा, जो है इनका पड़ोसी कंट्री। ये देखो आप मैप पे लोकेशन मैं, चलो मैप खोल के भी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ ज्योग्राफी क्या है यहाँ की। तो आई होप यहाँ पे मैप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो, दिस इज डीआरसी विच इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनकी कैपिटल क्या है? इनकी, अरे ये क्या खुल गया, इनकी कैपिटल है ये एकदम कोने में जाके, वेस्ट में जाके, किनशासा। सो ये ध्यान रखेंगे, किनशासा इज द कैपिटल which is on the western, you could say, border of DRC. DRC is a huge country। देखो आप कितनी बड़ी है ये, थोड़ा बाहर आके देखो, ये देखो कितना बड़ा है डीआरसी, एंड कितना पिद्दा सा है आपका रवांडा, कितना छोटा सा। ये रहा रवांडा, ठीक है। सो अब ये जो M23 रेबेल ग्रुप है, इन्होंने एक जगह पे अपना कंट्रोल ले लिया है, जिस जगह का नाम है गोमा, विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ रवांडा एंड डीआरसी। अब जूम करेंगे तो मिल जाएगा हमें गोमा। देखो गोमा कहाँ लिखा है, ये रहा गोमा। So as you can see कि this Goma region lies in DRC, border के इस साइड है, and on the banks of Lake Kivu, जो कि एक लेक है which is present in both the countries। आधी रवांडा में है और आधी आपकी डीआरसी में है। सो ये गोमा को इन्होंने कंट्रोल में ले लिया, मिलिट्री रेबल्स जो M23 ग्रुप है, एंड वहाँ पे ये लोग अपना क्या कहते हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज और लोगों को मार रहे हैं और वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे एंड हम आगे चल के किनशासा में भी अपना शासन जमा लेंगे। wow, that rhymes। किनशासा में भी दिल टेक कंट्रोल। सो किनशासा कहाँ पे? यहाँ है समथिंग गोमा, एंड किनशासा देख रहे हैं आप कितना दूर है, लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर, एकदम ऑन द अदर एंड ऑफ डीआरसी इज किनशासा। सो दैट्स प्रैक्टिकली वेरी टफ फॉर अ मिलिट्री ग्रुप लाइक M23 एज ऑफ नाउ। अच्छा, रवांडा बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजंस इनको हेल्प कर रहा है। रवांडा हैज रियली डेवलप्ड अ लॉट इन रीसेंट टाइम्स विद सपोर्ट फ्रॉम वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज, with recent technology, recent equipments, recent defense equipments, recent modern warfare equipments, arms and all of those things। So Tutsis को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यही है आपका पूरा मसला। अब एक और चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है कि आपका जो डीआरसी है वो इतना प्यारा क्यों है रवांडा को? रवांडा का क्या फायदा हो रहा है इसमें? रवांडा का फायदा इसलिए हो रहा है बिकॉज डीआरसी इज वेरी रिच इन मिनरल्स। व्हाट मिनरल्स? मिनरल्स लाइक गोल्ड, मिनरल्स लाइक कॉल्टैन। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ ईवी बैटरीज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो रवांडा का ना ही सिर्फ कल्चरल कनेक्शन है, बट इट्स ऑल्सो बिहाइंड द मिनरल वेल्थ ऑफ कॉन्गो। सो वो उस चीज को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। सो अभी जो है वहां पे यूएन पीस कीपिंग वाली जो फोर्स है, दे आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दे आर ट्राइंग टू ईज थिंग्स आउट। बट जो आपका डीआरसी है, उन्होंने बोल दिया है कि रवांडा ने जो हरकतें करी हैं, दैट क्लासिफाइज एज एन एक्ट ऑफ वॉर, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। रवांडा के प्रेसिडेंट कौन है? रवांडा के प्रेसिडेंट है हमारे पॉल कगामे। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो है, हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे टुत्सीज को। उन्होंने M23 नहीं बोला, ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा टुत्सीज के हम समर्थन में एकदम खड़े हुए हैं, ठीक है। सो इनके जो प्रेसिडेंट हैं फिलिक्स साहब डीआरसी के, वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है इनको बाहर निकाल देंगे। सो यही है, बस इतना ही मसला है। एक और इनकी क्या कहते हैं, जो हुतू ट्राइब्स हैं,
उनकी एक फोर्स है विच इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक फोर्सेस ऑफ लिबरेशन ऑफ रवांडा। तो वहां पे उनको रवांडा वालों को एक पॉइंट ये मिल गया कि इनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है हुतू लोगों की, विच इज कॉल्ड द FDLR और डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर लिबरेशन ऑफ रवांडा, वो हमारी नेशन की सॉवरेंटी को एक थ्रेट पहुंचा रहे हैं। तो हम जो है, जो रवांडन जेनोसाइड था उसको बदला लेने के लिए या सोलो उसकी जस्टिस के लिए, वी आर supporting the Tutsis in eastern DRC, Eastern Congo. So that is the whole issue in a very precise, concise, and simple manner. I hope all of you now understand the context of what exactly is going on in Congo and why is it going on. What is the historical context? What is the cultural context? What is the financial context? And what is the geopolitical context? ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं कॉन्गो में। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, छोटा सा ही था तो मैंने इसलिए कहा था कि बाद में किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज फेंटेनिल। फेंटेनिल इज अ यूएस प्रॉब्लम सेज चाइना। अब जो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब हैं उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है मेक्सिको कनाडा पे और 10% लगा दिया है चाइना पे, विच वी आर जस्ट लुकिंग एट, एंड दिस वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे ट्रम्प भाई साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा जो है इनके साथ बहुत बड़ा फिजिकल ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इन 3 कंट्रीज के साथ, एंड दे आर सेंडिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ फेंटेनिल which is killing thousands of people in our country, the drug fentanyl, एंड इसीलिए हम ये टैरिफ्स लगा रहे हैं। चाइना का रोल जो है फ्लो ऑफ फेंटेनिल को रोकने के लिए। तो यूएस जैसे हमारे यहाँ ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एजेंसी है विच इज योर आपका एनसीबी, वहां पे जो एजेंसी है उसको बोलते हैं डीईए। अगर आपने यूएस क्राइम शोज या यूएस मूवीज देखी हो तो आपने डीईए बहुत सुना होगा। यूएस का डीईए डिपार्टमेंट, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा होगा तो आपने डीईए डेफिनेटली सुना होगा। जो हैंक करके कैरेक्टर था, यूज्ड टू वर्क फॉर डीईए। सो बात करें हम फेंटेनिल की, तो फेंटेनिल इज अ सिंथेटिक ड्रग, इट्स अ सिंथेटिक ओपियोइड। सिंथेटिक से मेरा मतलब क्या है? इट्स नॉट नेचुरली अकरिंग, it is created in the lab. It's a synthetic drug of the opium family of opioid category. तो जो opium family वाले synthetic drugs होते हैं उनको हम opioids बोलते हैं। And this is 100 times more potent than morphine and 50 times more potent than heroin as an analgesic. Analgesic क्या होता है? कॉम्बीफ्लेम पता है आप लोगों को क्या होती है? कॉम्बीफ्लेम, डिस्प्रिन, दीज आर मेडिसिन्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, पेन किलर्स जो होती हैं आपकी। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा मॉर्फिन दी जाती है जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा पेन में होते हैं उनका पेन ईज आउट करने के लिए। सो मॉर्फिन सोचो इतने दर्द में दी जाती है, अगर उसका 100x पोटेंट आपको पेन रिलीफ या ड्रग कोई दिया जाए तो दैट कैन बी सुपर एडिक्टिव। यानी कि अगर वो पेन किलर्स भी आप खा रहे हो तो यू कैन गेट एडिक्टेड ऑन दैट। सो दैट इज हाउ डेंजरस फेंटेनिल इज। इंडिया में इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हमने जब पढ़ा था एनडीपीएस एक्ट लॉ स्कूल में, फेंटेनिल वाज वन ऑफ द ड्रग्स जिसकी बहुत ही कम क्वांटिटी भी कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है। आई थिंक इट वाज 2.5 ग्राम या मिलीग्राम। लेट मी जस्ट क्विकली चेक कमर्शियल क्वांटिटी of fentanyl in India. Can't seem to find it right now. But what I remember correctly is this was very less, like 2 ग्राम या 3 ग्राम ऐसा कुछ इसकी कमर्शियल क्वांटिटी है। यानी कि 2 ग्राम फेंटेनिल इज कैन बी कंज्यूम्ड बाय मास। उसको आप बेच सकते हो हजारों लोगों को, हजार तो नहीं, चलो सैकड़ों लोगों को। ठीक है, सो दैट इज हाउ पोटेंट द ड्रग इज। एंड इसके ओवरडोज से यू कैन योर स्किन बिकम्स ब्लू, यू कैन गेट इनटू कोमा, यू कैन डाई बाय रेस्पिरेटरी फेलियर, बाय पैरालिसिस। बहुत खतरनाक ड्रग है। से नो टू ड्रग्स, डोंट डू ड्रग्स, ड्रग्स आर बैड। नाउ ओपियाइड जो मैं बता रहा था आपको, वो मिलते हैं ओपियम पॉपी प्लांट से, एंड these are very dangerous drugs. So that is the sort of gist of why US is saying that we don't want to have lesser tariffs on fentanyl.
एंड इशू यहाँ पे ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं ओपियोइड के, उनको तुरंत इसका इम्पैक्ट फील होता है, तुरंत इसकी लत लग जाती है, एंड जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आपके ओपियोइड होते हैं उसका एडिक्शन हो जाता है. सो यूएस में एक तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि वी हैव अ ओपियोइड एपिडेमिक, यानी कि इतना ज्यादा ओपियोइड ओवरडोज, ओवरडोज तो नहीं, ड्रग अब्यूज हो गया है कि इट हैज बिकम एन एपिडेमिक, इट हैज बिकम लाइक अ डिजीज, इट हैज बिकम सो डेडली एंड सो वाइड स्प्रेड कि the number of people who died from drug overdose in 2021 was 6 times what they were in 1999. यानी कि लगभग 20-21 साल में 6 गुना लोग मरने लगे हैं. 75% ऑफ दीज डेथ्स वर फ्रॉम ओपियोइड्स, यानी कि अगर 100 लोग मरे उसमें से 75 जो है ओपियोइड्स के ओवरडोज से मर रहे हैं. सो यूएस ने जो है प्राइमरली बैन कर दिया ट्रैफिकिंग ऑफ फेंटानिल फ्रॉम दीज टू कंट्रीज, मेक्सिको एंड चाइना प्राइमरली, एंड दैट इज व्हाट द आर्टिकल टेल्स यू अबाउट. ठीक है जी. ओह, स्क्रीन स्टिल हैज द डीआरसी मैप. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने बस यही लिखा था वैसे स्क्रीन पे कि इट्स एन ओपियोइड एंड इट्स अ एपिडेमिक. ओके, बाकी आई थिंक आर्टिकल आप लोगों को समझ आ गया. All right, chalo. Let's talk about the next one, which is UK to introduce laws against AI tools used to generate sexual abuse images. Now, this is exactly what the headline says. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ explain करने को नहीं है. But हाँ, Britain is going to be the first country to introduce such laws, which would be, protecting children's right against sexual abuse, and especially in context of AI. So this would put a curb on pedophilia, and would make things much more smoother in terms of usage of AI for the right purposes, and cutting down on this particular problem of child sexual abuse. That is what they are planning to do. So इतना ही है इस न्यूज़ में. You can say this was more of a one-liner rather than explanatory article. इसमें इन्होंने ये भी प्लान किया है कि they would be punishable, the offenders of this particular offense of creating fake AI images of children would be punishable by up to 3 years in jail. 3 years of prison is the penalty, which I think is a little less. Should be much more. But anyway, moving ahead to the next article, which is also the last article of today, is fossil fuels and subsidy. Now, as we were discussing, that the transition from fossil fuels to renewable energy is not easy. When you talk about subsidies, it can be for multiple things: for consumption, for explicit usage, for implicit usage. And जैसा कि article कह रहा है कि it can range anywhere between $1 trillion to $7 trillion. So गवर्नमेंट जो है पेमेंट दे रही है फॉसिल फ्यूल्स को सस्ता बनाने के लिए, एंड ये पेमेंट किसको जा रही है? फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स को जा रही है, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए, उसकी रिफाइनिंग के लिए, उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए. यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोल. तो कोल पे अगर हम सब्सिडीज दे रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड एट लार्ज. That makes coal cheaper to mine, to refine, and for consumers to buy coal based, let's say, energy. Correct? So कैसे जा पाएंगे अगर हम सोलर पे जाना है हमें? अगर कोल से आपकी एनर्जी मान लो 100 रुपीज में बन जा रही है, सोलर से 1000 रुपीज में बन जा रही है, तो हाउ वुड यू इंसेंटिवाइज पीपल टू स्विच टू a renewable source? अब उनको 10 गुना ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है. So that is what the article is saying, कि 80% of these explicit subsidies went to consumers and the rest into fossil fuel production. एंड ये सब्सिडीज जो है बढ़ भी गई, इनका प्राइस जो है हाइक भी हो गया व्हेन द रशिया यूक्रेन थिंग हैपेंड, बिकॉज रशिया वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल, एंड वहाँ पर फिर सैंक्शंस लगा दिए बहुत सारी कंट्रीज ने, तो प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बढ़ गए, एंड या थिंग्स बिकेम मच मोर टफर. एंड ये बात करते हैं कुछ कंट्रीज की जहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सिडीज है फॉर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स. Of course, the obvious answers are oil producing countries like Saudi Arabia, Libya, Algeria, Turkmenistan, and so on, which are spending more than $500 per person to support fossil fuel production. यानी कि 50,000 रुपए मोटा मोटा, 45,000 लगभग मान लो, ऑलमोस्ट 87 का तो हो गया डॉलर, सो 90 मान के 45,000 रुपीज पर पर्सन सरकार खर्च कर रही है फॉसिल फ्यूल को सस्ता करने के लिए, फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज उनकी इकोनॉमी तो ऑयल पे चल रही है. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. And कुछ कंट्रीज में दिस सब्सिडी कैन इवन गो ऑन अप टिल 10% ऑफ द जीडीपी.
एंड इसी वजह से ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। जो कंबाइंड नंबर 7 ट्रिलियन का आप सुन रहे हो, दैट इज़ अ ग्लोबल नंबर which is 4 times the 1.5 trillion which earlier what used to be. So they're saying that we're not moving in the right direction when it comes to moving to taking steps for climate change, and we are just increasing pollution, increasing global warming, and yeah, burning fossil fuels, and उससे मामला हल नहीं होगा. So that is what they say, and they are giving multiple numbers for that as well. You can read the article. It's an interesting read. इस टाइप के आर्टिकल्स कई बार आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या लॉजिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में काफी बार आ जाते हैं. So yeah, that brings us to the end of today's analysis session. I hope this was helpful. Let's quickly look at the vocabulary for the day. The first word of the day is venal. Venal का simply मतलब होता है घूसखोरी, showing or motivated by susceptibility to bribery. Corrupt, corruptible, bribable. That is what venal means. की पोटेंशियल है घूस देने का. इनकरप्टेबल, एथिकल एंड ऑनेस्ट आर ऑफ कोर्स ऑपोजिट्स. दे आर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन वीनल प्रैक्टिसेस, यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैंडेमोनियम. पैंडेमोनियम का मतलब होता है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर और कंफ्यूजन एंड अप्रोर. शोर गुल्ला, एंड आप जो जिसको कह सकते हो कोहराम मचना. That is what pandemonium actually means. Synonyms are bedlam, chaos, mayhem. Antonyms are calm, hush, peace. There was pandemonium when the news was announced. Yeah, so interesting, nice word, pandemonium. Then the third word is geriatric. Geriatric is used for old people, old person who is receiving special care. Elder, senior citizens के लिए geriatric word use होता है. Antonyms are youngster and youth. The geriatric patients will be moved out. So geriatric is senior citizens in special care. Then pandemonium is uproar and noisy disorder, and venal is corrupt or susceptible to bribes. These are the three new words for the day, and that brings us to the end of today's class, today's analysis session. Thank you so much for participating, and I'll see you all in the next one tomorrow, same time, same place. Till then, keep learning, keep preparing. Programming is saying the next Menti quiz will be on what topic? आप लोग सजेस्ट करो टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली टेक अ लुक ऑन दैट. सो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ नेक्स्ट मिनटी क्विज आपको किस टॉपिक पे चाहिए. चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो अगेन एट 3 PM. बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ.